lost in the shadows all alone. Silent tears falling, heart turned to stone, whispers of love echo in my mind. Faded memories, a love left behind, searching for solace in the depths of despair. Torn apart, emotions too much to bear. Aching heart, like a fragile glass. Shattered dreams, now only remnants of the past. I'll sing my sorrow in every note I play. Aching melodies carry me away. In the silence, my pain I release. Through the beauty of silence, I find my peace. Alone.
I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अजीब बात है, मैं पानी में उतरा भी नहीं हूँ, लेकिन दिल की धड़कनें अभी से काफी तेज हो गई हैं। तो रुको जरा, सबर करो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। If you wanna go, I'm down. Darling, we'll make a bigger thing. हेलो, तो आज है चिकमगलूर में हमारा दूसरा दिन और हम लोग जस्ट अभी आए हैं घूमकर। सारा कुछ हमने जितना हो सका उतना हमने कवर किया। मुल्यानगिरी पॉइंट व्यू जो है वो बाकी है, तो वो हम लोग कल देखने वाले हैं। और आज हम लोग गए थे हेबे वाटरफॉल्स, काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। और वहाँ पर एक हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि मैं वहाँ पर गिर पड़ी थी और मुझे थोड़ी सी चोट भी आई है। फ़ोटोज़ के लिए पोस्ट देते देते मैं वहाँ पर गिर पड़ी थी। तो कोई बात नहीं, होता है कि हम सबके साथ होता है, तो कोई स्ट्रेंज बात है नहीं इसमें। तो आज हमारा था दूसरा दिन और हम लोग कल जाने वाले हैं मुल्यानगिरी, बाबा बुदनगिरी। अभी तो हम लोग आ गए हैं होटल और अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है। और उसके बाद पियेंगे अच्छी सी कॉफ़ी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो कुल मिलाकर दिन हमारा बहुत अच्छा गया, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। एंड एवरीवन लव्ड द हेब्बे फॉल। इट वाज वर्थ द विज़िट।
वी वुड लाइक टू कम हेयर अगेन। अब कल हमें मुल्यानगिरी जाना है एंड वी आर प्लानिंग टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। इस पीक की हाइट है 6,317 फीट फ्रॉम सी लेवल। एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीच दैट हाईएस्ट पीक। आपको उस पीक पर एक छोटी सी लाइट जलती हुई दिख रही होगी, वो वहाँ पर एक टेम्पल है। बस हमें उस पीक तक कल पहुँचना है। मुल्यानगिरी पीक इज़ द हाईएस्ट पीक in Karnataka. See you soon in the next vlog. Till then, bye bye and take care.